तो आज काफ़ी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है एक निवेशक के नज़रिए से? अगर आप पूरे साल का कॉल ले रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को रन कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? ये सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक काफ़ी बड़ी हस्ती मार्केट की जुड़ रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ए बाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाला, गुड मॉर्निंग और वेरी हैप्पी न्यू ईयर 18 ऑफ स्वदेश टीम से। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, आप ऑफिस में हैं इस समय। इस साल के लिए जिस हिसाब से ये कोविड का तीसरा साल होने वाला है, काफ़ी हद तक अब लोग इस फियर को समझते हैं और जो कॉशियस रहते हैं और प्रिपेयर्ड रहते हैं वो इसको अवॉइड भी करते आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इस साल के लिए कुछ ऐसे टॉप मॉनिटरेबल्स इन्वेस्टर्स के रेडार पे क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? थैंक यू अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज टू हैव मी एज पार्ट ऑफ योर शो टुडे। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई एम श्योर 2022 is going to be a year of full of action, and I think it's going to see reversal of what you have seen in the last 2 years in terms of pandemic getting impact the whole economy as well as the market as a whole. But of course, the market has seen a new high definitely in the last 2 years that all of us know about it. I think clearly आप 2022 में जाते जाते clearly दो तीन चीज of course economic के लिए देखना पड़ेगा। Clearly the last एक साल से the interest rate 2 साल से तो pandemic के हिसाब से जो economic recovery करने के लिए जो clearly RBI ने रेट काट के और लिक्विडिटी बढ़ा के और जितना से इकोनॉमिकली सपोर्ट किया है, एक्चुअली that's something we'll have to just see with the increased commodity prices that you have seen in the last year and increased the activities that could come up in the coming year 2022. और दूसरा एक्चुअली इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का बढ़ने का उम्मीद जो है और इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है एक्चुअली, तो उसका भी इम्पैक्ट कैसे आ सकते हैं। therefore there are 3-4 factors one has to look at in the current year 2022. One, how the commodity prices are going to behave, उसके हिसाब से जो how will have an impact on the inflationary pressure. Second, inflationary pressures के लेके the central banks globally the last 2-3 साल से जो liquidity इतना बढ़ा के इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए किया था, उसका आपको अनवाइंडिंग प्रोसेस कितना स्मूथ हो सकता है और कितना पेनफुल हो सकता है। मेरे हिसाब से पेनफुल नहीं होंगे क्योंकि clearly the growth is coming back in a small way. Therefore growth as it starts coming in, जो unwinding process भी जो चालू हो जाएंगे, I think वो भी something one has to watch out. And finally the last 2 साल से especially last year 2021, I think China factor was a big hanging sword for the emerging market. जिस हिसाब से China went on a regulatory overdrive that I can call it, जो हर सिस्टम से हर एनवायरमेंटल जो इंडिया ने जो पहले फोकस किया था सबका साथ सबके विकास के हिसाब से, जो अपना प्राइम मिनिस्टर ने जो लास्ट 5 साल से ड्राइव कर रहा था, आई थिंक चाइना इज गोइंग द सेम वे दैट सोशल बेनिफिट हैज टू अक्रू टू द कॉमन मैन इन चाइना। उसका भी टैप स्टैंड जो लिया था एक्चुअली 2021 में, आई थिंक मेरे हिसाब से उसका रिवर्सल हो सकता है मेनली ऑन सपोर्टिंग द ग्रोथ कमिंग बैक। आई थिंक क्लियरली द 2022 is going to be a mix of growth coming back on one side, unwinding process on the other side, inflation pressures के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के लिए उम्मीद भी है, आई थिंक वो भी क्या सकता है। therefore is going to be something very very interesting to see 2022, but clearly as I always say that 2022 is could be another year. I think मेरे हिसाब से इंडिया especially we will get into the 10 years of bull market, क्योंकि जो लास्ट पेंडेमिक के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव लिया है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया आ सकता है। therefore 2022 will be another year one has to watch out. But I think longer term हिसाब से देखते हैं, clearly all these parameters are going for something to create a longer term bull scenario. Right. Bala, hi, morning, Mihiir here. और आपको एक बार फिर से 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाला, अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो एक्चुअली 2021 जो कि न्यूज़ फ्लो के लिहाज से या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से इतना वॉलेटाइल था, दैट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी द सेकंड बेस्ट ईयर। 2017 में कैलेंडर ईयर में निफ्टी ने करीब 29% का रिटर्न दिया था और उसके बाद
2021 में इसने 24% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर इवन इफ वी एवरेज इट आउट ओवर लास्ट 5 इयर्स तो भी 16-17% के आसपास का रिटर्न निफ्टी का बैठ रहा है। अब ये साल जो कि आप खुद भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए थे उसका पूरा इम्पैक्ट या फिर पूरा रिजल्ट जो है वो 2022 में देखने को मिलेगा। अगर हम उसे एक एवरेज मानकर चले इम्पैक्ट, तो भी डबल डिजिट में या फिर 16-17% प्लस के आसपास का रिटर्न, इज इट अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इज इट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, या फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप करना चाहेंगे मार्केट रिटर्न्स की या फिर फ्रंटलाइन इंडेक्स रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ? या आई थिंक क्लियरली मिहिर जो हिसाब से मार्केट हमेशा बिहेव करते हैं, any good continuous good year of 2-3 year period, generally they don't follow up with similar kind of return coming to the investors. So इसके लिए volatility set हो जाते हैं, expectation different हो जाते हैं, but market का भी clearly earnings तरफ से एक तरह से market चलते हैं और macro factor के हिसाब से market चलते हैं। actually जो last 2 साल से conducive environment market का जो बनाया है, that's something we'll have to see in the next year somewhat getting moderated. दूसरा एक है investments in reviving the economic growth, employment growth coming back, reviving the economic growth by way of investment by various infrastructure projects, and वो सब में actually including private sector के capex का भी उम्मीद है actually 1-2 साल में, therefore उसका भी actually revival हो जाएंगे। Whenever we get into the growth phase, generally growth phase में earnings आते हैं ऊपर, बट मार्केट का जो पहले ही जो ये उम्मीद के हिसाब से जो मार्केट बढ़ जाते हैं, that has to get moderated. This I call it as a phase which is a despair phase, then come to the hope and optimism phase, then go to the growth phase, again वापस optimism phase आ जाते हैं। मेरे हिसाब से 1-2 साल के लिए most of the country will go to the growth phase, and growth phase में आपको EPS बढ़ते हैं, earnings आते हैं, मार्केट रिटर्न थोड़ा कम आ जाते हैं। Therefore that's something one has to I think keep in mind. क्लियरली आई थिंक दूसरा एक तरफ से मार्केट को देखना चाहिए, लास्ट 2 साल से पार्टिसिपेशन जो इन्वेस्टर्स को जो बढ़ा था एक्चुअली, उसका वजह से तो इजी मनी जो हुआ था एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए, इजी मनी वेदर आईपीओ और कोई भी मार्केट में आप पैसे डालते हैं, जो इजी मनी जो आया था लास्ट 2 साल से, दैट इजी मनी हमारे हिसाब से विल बी प्रॉब्ली बिहाइंड अस फॉर सम टाइम्स, सो व्हिच एसेंशियली मींस फंडामेंटली साउंड कंपनीज डीपली वैल्यूड, आई थिंक मेरे हिसाब से वो सेक्टरल रोटेशन भी आई थिंक हो सकता है। Therefore, having an expectation, a similar of 2021 return will get expected in the coming year, is something one has to think with some pinch of salt in that. Given the fact that the कोई भी good year on market point of view, go through a consolidation phase. But having said that, but having experience last 2 साल को जो experience जो आया market में आया, mutual fund जो आया, मेरे हिसाब से participation levels हैं, तो from a longer term point of view मेरे हिसाब से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लास्ट 5 साल का रिटर्न देखते हैं, 10 साल का रिटर्न देखते हैं, अगर 20 साल का रिटर्न देखते हैं, क्लियरली इज अ डबल डिजिट, मच बेटर देन योर एसेट क्लास, विल गेट इट विद द कंबाइंड बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन टैप। उसके हिसाब से देखते हैं, क्लियरली मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन 2022 में म्यूचुअल फंड में और मार्केट में बढ़ सकता है। राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग टू यू मिस्टर सुब्रमण्यम। बिल्कुल लाइक आपसे और भी व्यू जानना चाहेंगे डिफरेंट सेक्टर्स पर भी, कि इस अगर हम अब Q3 के नंबर्स में, अब वी हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इन, कंपनीज ने अपने Q3 के रिजल्ट्स पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। अगर हम आपके पोर्टफोलियो को भी मैं देख रही थी कि मेजर आपके जो टॉप फंड्स हैं उनमें ऑटो का एक्सपोजर बहुत कम है। Q3 के नंबर्स में क्योंकि Q2 में इतनी डिस्ट्रप्शंस नहीं रही, तो शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ बेटर होगी, लेकिन आपको क्या आउटलुक लगता है 2022 के लिए ऑटो स्पेस पे? क्योंकि एक कंसर्न ये नहीं भूलना चाहिए कि थर्ड वेव में अब फिर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शंस आपको चाइना में, हांगकांग में, वहाँ प्रोडक्शन में दिख रही हैं, तो फॉर श्योर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी और शायद सप्लाई भी डिस्टरप्ट होगी। तो व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इस साल के कैसे रहने वाले हैं ऑटो स्पेस के लिए, अगर आप इस पर अपना आउटलुक शेयर कर पाएं? Yeah, and thank you Priyanka for this question. Clearly, I think दो क्वार्टर का फोकस कॉल लेना मुश्किल है, क्योंकि the way input cost has gone up for this sector, and the way electric vehicle का disruption जो चल रहा है एक्चुअली सेक्टर के ऊपर, ये सब मिलके देखते हैं क्लियरली ऑटो सेक्टर is going through its own makeover, I can probably call it. I think the business model undergoing change, consumer behavior undergoing change. इस हिसाब से जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो चलाते हैं एक्चुअली,
mainly to make every vehicle that is being manufactured should be following the ESG norms. So uske हिसाब से देखते हैं, I think the whole sector is going through some bit of makeover period, I would say. Clearly, I think the economic activity is coming back. I think auto as a sector will see an increased, renewed interest coming from buyers per se point of view. Second, auto ancillary is something also मेरे हिसाब से demand I think बढ़ सकता है क्योंकि number of vehicle population is rising. Clearly, the auto ancillary sector is something would be one of the sector to watch out. I think it's something is more about evaluation and the way I think some of the dynamic that I think impact the market that I think we have to see. Clearly, from the portfolio action point of view is quite dynamic. So आज के दिन पे शायद the overweight and underweight हो सकता है. But I think it's more one has to look at in relation to the index weight and also in relation to the complete outperformance the sector can give compared to the overall market. But as a fund house, we have been extremely bullish on technology companies, given the fact we are saying structurally the sector I think is going to go for a 10 years of bull market. And second, as capital sector will see a significant revival coming in क्योंकि the investments in infrastructure को जो आज के दिन पे जो बढ़ते जा रहे हैं globally, both government as well as the private sector के investment जो उम्मीद जो है उसका साथ capital sector also will be another sector. In our own belief that will continue to do well. Real estate sectors have gone through a makeover with inventories going down, demand coming back, with interest rates being low. Maybe the real estate sector also in our own belief I think will do well. But real estate sectors के एक advantage है the whole the ecosystem related to the real estate sectors will also be the significant beneficiary of that. I think ऐसा आप देखें actually clearly structurally bullish sectors that are there. That I think we as a fund house have been quite overweight and continue to gain significant benefit on the portfolios. Right. बाला, ये इस समय ये वो समय भी है साल का जब गवर्नमेंट की तरफ नज़रें पूरे मार्केट की होती हैं, बजट की प्रिपरेशंस शुरू हो गई हैं, जीएसटी कलेक्शंस के जो नंबर्स हैं टैक्स कलेक्शंस के वो इतने स्ट्रॉन्ग आए हैं इस बार कि ये उम्मीद बन रही है बाजार में कि कैपेक्स की तरफ एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड मिनिस्ट्री की तरफ। ये बात तो फैक्ट है कि जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स ने बहुत बड़े पोर्शन को आउट परफॉर्म किया या उनकी उम्मीदों को आउट परफॉर्म किया है। तो आप इस तरह की, क्योंकि प्री बजट रैली बाजार में उन उम्मीदों पर शुरू हो जाती है, एक बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट के तरफ से आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी जिस हिसाब से मैक्रो सिचुएशन इस समय है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट का जो हाल है इस समय? सर, दो तीन चीज मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लिए भी फायदा हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जीएसटी कलेक्शन जो आप बोल रहे हैं, I think very clear focus on improving the GST collection by making whatever the course correction that has to be done, and also increase the compliance, which I think Finance Minister has been undertaking these initiatives quite regularly and a very systematic manner. मेरे हिसाब से ये जो हिसाब से जो कर रहे हैं, I think GST collection will continue to show an uptick. Now at about 1,30,000 crores as the economic activities pick up. I'll not be surprised if it actually touches close to about 1,40,000 or something by end of this current financial year. दूसरा एक है एक्चुअली दैट डाइवर्समेंट जो हिसाब से जो गवर्नमेंट जो लास्ट 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली आई थिंक माय ओन बिलीफ इज एलआईसी विल बी द लार्जेस्ट आईपीओ डाइवर्समेंट हैपन। उसका फायदा एक तो है, एक तो गवर्नमेंट का एक डाइवर्समेंट प्रोसेस चालू हो जाते हैं, क्लियरली द अनवाइंडिंग ऑफ वैल्यू, सॉरी अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू फॉर द गवर्नमेंट आई थिंक विल इंक्रीज एंड देयरफॉर द फिस्कल सिचुएशन विल गेट बेटर। एंड थर्ड मेरे हिसाब से जो हिसाब से पीएलआई स्कीम का जो they have not gone about stitching all the pain points that are around the PLI schemes. मेरे हिसाब से 2022 में we'll see a significant progress under the PLI schemes. More and more companies setting up the unit under the PLI schemes. उसका एक benefit of course आ सकता है कि FDI investment in the country will be far higher than FII's inflows in the country. So therefore उसका वजह से forex reserves which is now close to about $640 billion. मेरे हिसाब से we may probably touch about 1.5 years time frame close to about $1 trillion of forex reserves. I think उसको वजह से भी हमारे हिसाब से the current account deficit is getting better, balance of payment getting better, currency stability, low interest rate regime, economic revival happening in the year 2022 and beyond. I think all put together हमारे हिसाब से this will drive the overall sentiment. The last but not the least, the China factor definitely has made India the best alternate for global investors.
मेरे हिसाब से 2022 में there will be an increased participation coming from foreign investors in India, both the FDI as well as the FIIs, mostly FDIs I would say, and उसका impact भी I think मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत फायदा हो सकता है, combined with the political stability that we are seeing. Only the fact that you have to watch out, of course this year will be full of news on the political election, though broadly one would expect more of a stable outcome, but of course increase the level of anxiety in the market, therefore that can lead to some bit of volatility on an intermittent basis. राइट इनफैक्ट बाला आपने बहुत सारे फैक्टर्स गिना दिए और कहे बगैर कहीं ना कहीं आप ही इंडिकेट कर रहे हैं कि 2022 मे टर्न आउट टू बी एज गुड एज 2021 और इवन बेटर. आपने पार्शली ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की वही मेरा अगला सवाल भी था, बिकॉज एटलीस्ट जो फर्स्ट हाफ है H1 है 2022 का वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है और उम्मीद इस समय ये बनी हुई है, जो हमारा भी एग्जिट पोल जो इंडिकेट कर रहा है कि शायद एटलीस्ट जो बड़े स्टेट्स है वहाँ पर कोई मेजर अपसेट देखने को नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग यूपी. अब अगर ये कंसिस्टेंसी रहती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और दूसरा बजट में कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट रुझान देखने को नहीं मिलता है, तो फिर मार्केट के पास क्या ये रीज़न होगा टू बिल्ड ऑन द ऑप्टिमिज्म एंड सेंटिमेंट? क्लियरली मिहिर मेरे हिसाब से स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, political stability, aggressive policy framework, and earnings coming back. I think the most important मेरे हिसाब से जो हिसाब से लास्ट एक साल में earnings जो corporate earnings जो वापस आ रहे थे, clearly we see in the year 2022 earnings growth coming back. Plus दूसरा एक actually I think current fear of Omicron and current pandemic issue that we I think all of us are discussing about the beginning of the year, मेरे हिसाब से it may be short-lived. As the economic activities pick up globally, मेरे हिसाब से 2022 again would be a great year from the optimism point of view. But as I mentioned earlier, from return expectation point of view, one should not keep aside 2022 as a single year return expectation. मेरे हिसाब से आपको 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा. वो हिसाब से इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं एक्चुअली आज के दिन पे, लाइक SIPs, choosing dynamic bond fund kind of model, and flexi cap kind of investment or opportunity that one is able to build. And मेरे हिसाब से 10 साल के हिसाब से one should start building the portfolio rather than building the portfolio for only the year 2022. राइट बिल्कुल. मिस्टर सुब्रमण्यम, हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग अ लॉट टू इवन डू एसेट मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए वो अपने टारगेट्स को रीच करना चाहती हैं. हालांकि एक खबर ये भी आई थी कि शायद उनके जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उससे शायद फॉल बैक कर सकते हैं. लेकिन अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है, एसेट मोनेटाइजेशन की बात होती है, तो आपका आउटलुक उस सेक्टर पर, आप उस स्पेस पर किस तरह से अपनी व्यू बना रहे हैं? क्लियरली गवर्नमेंट का जो हिसाब से जो स्टेप्स लेते जा रहे हैं, एक्चुअली लास्ट 2 years since the time they initiated BPCL divestment, they also figured out various challenges. Challenges could be the structure. The LIC itself would have given them a great learning of how the structures have been done. Second, deep dive in terms of किधर value of the assets is very very large, क्योंकि unlocking a potential उसका वजह से I think बड़ा आ सकता है actually. Clearly the unlocking of value, I think value based companies which are deeply what do you call undervalued on the basis of the assets, replacement cost, जो इस हिसाब से जो the economic recovery के हिसाब से जो value उसके लिए बढ़ सकता है. Therefore, there is a great opportunity which I think exists both in the public sector companies, even on the private sector company. I think it exists in both the cases. But finally, from the public sector companies point of view, 2 साल से consolidation के हिसाब से, जो banking industry consolidation के हिसाब से various steps that are being taken by the government, clearly I think we will have to start seeing some benefit accruing to some of those names. Clearly, in the base of the efficiency factor improving and the valuation remain cheap. And that's why I think the search for valuation, search for deep value companies could also be potentially high in the year 2022. We'll probably see some bit of shift moving towards chasing only the high growth companies versus the value companies, towards value companies. बाला, एक आखिरी सवाल आपसे. जैसा कि आपसे मिहिर ने पूछा था कि ये 6th ईयर है पॉजिटिव रिटर्न्स का, और मीन रिवर्जन भी एक बहुत ही स्ट्रांग चीज़ होती है मार्केट में. आपको लगता है कि 2022 भी एक पॉजिटिव रिटर्न हो सकता है मार्केट के लिए, पार्ट ए? और अगर कोई 3 to 5 ईयर व्यू लेके चल रहा है, तो जिस हिसाब से अर्निंग्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे,
अर्निंग्स ग्रोथ की, एक ऑलमोस्ट 18% काइंड ऑफ कैगर की पॉसिबिलिटी है कि अपने पोर्टफोलियो से जिस हिसाब से चीजें स्टैक्ड अप हैं? See, these are numbers, Ajay. I think मेरे हिसाब से market always gives returns, very high return when it's least expected. When you start building expectation, इतना return मिल जाएगा, तभी I think I can give the complete reverse of that. I think वो basis of principles में अगर करते हैं, clearly I think instead of setting up that expectations and also expect the last 2 साल से जो return जो आया will get repeated. My own belief is, on an average, in the equity market, in mutual fund, diversified equity funds, the expectation should always be nominal GDP plus about 3-4% equity risk premium. Therefore, on an average, if you look at लाभ 10 साल का देखते हैं, अगर 20 साल के देखते हैं, despite market giving very high return in between period, but the average return for the market has been in the range of around 14 to 16% kind of range, purely on the basis of the methodology we just mentioned. मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स भी वही हिसाब से आई थिंक चलना चाहिए, जो कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर देखते हैं, रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट और एनी अदर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, इतना एक्चुअली लो है, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर इज आल्सो कॉस्ट इन्वॉल्वड एंड टैक्सेशन इन्वॉल्वड. इक्विटी इज समथिंग आई थिंक इट विल डेफिनेटली गिव बेटर रिटर्न देन अदर एसेट क्लासेस, बट सब्जेक्ट टू कमिंग फॉर स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. राइट बाला, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि इन्वेस्टर्स जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं तो रिटर्न्स कम आते हैं, और जब लीस्ट एक्सपेक्टेशंस होती हैं तभी सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स होते हैं. इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो आप आगे मैनेज करें. बाला, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज बात करने के लिए. दैट वाज मिस्टर ए बालासुब्रमण्यम ऑफ बिरला. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते